टुडे वी आर गोना स्टार्ट नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी का जो पोर्शन है डायफेंटाइन इक्वेशन, उसमें से हम लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन आज शुरू करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ डायफेंटाइन इक्वेशन, एन इक्वेशन with one or more वेरिएबल्स, एक और उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए, which has to solve in integers is called Diophantine equation. Diophantine equation. Okay. Example. A linear Diophantine equation. Equation for two variables is ax plus by equals to c, जहाँ पर a, b and c belongs to set of integers। हमें इंटीजर्स क्या होता है पता है पहले से ही। इंटीजर्स इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ओके, ए लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन for three variables is ax plus by plus cz equals to d, जहाँ पर a, b, c and d all belongs to integers. Okay, now theorem regarding Diophantine equation. Theorem 1. The linear Diophantine equation ax plus by equals to c for two variables, जहाँ पर a, b, c belongs to integers is solvable. Solvable कब होगा? Solvable if and only if d divides c, d अगर c इंटीजर को डिवाइड करे, जहाँ पर where d is equals to gcd of a, b, जहाँ पर d a और b दोनों इंटीजर्स का gcd है। हमें gcd निकालना पहले ही आता है। सो d इक्वल्स टू gcd ऑफ a, b। इफ x0, y0 पॉइंट b एंड इनिशियल सॉल्यूशन, ये अगर कोई इनिशियल सॉल्यूशन होगा, देन द सॉल्यूशन सेट is given by x0 minus b by d into t, y0 plus a by d into t, जहाँ पर t belongs to set of integer. Okay, now proof. We have the Diophantine equation ax plus by equals to c, इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स जो होता है, जहाँ पर a, b, c belongs to integers, and we also have d equals to gcd of a, b। d जो है a और b का gcd है। Therefore d divides a and d also divides b, क्योंकि d a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। gcd मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो d ऑब्वियसली डिवाइड a एंड d डिवाइड b। अगर हम न्यूमेरिकल से इसे समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए हमारे पास a इक्वल्स टू 4 है एंड b इक्वल्स टू 16 है। ओके, a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 16। सो gcd ऑफ 4,16 क्या आता है? 4 आता है। सो 4 डिवाइड 4 एंड 4 ऑल्सो डिवाइड 16। सो वी कैन से d divides a and d divides b. Okay,
नाउ AU प्लस BV इक्वल्स टू GCD D, जहाँ पर where U and V are integers। अभी ये कैसे हो गया? इसे हम अगर न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करें तो 4 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 4। हमने क्या कहा है? हमने कहा है AU प्लस BV इक्वल्स टू D, जहाँ पर U और V कम्स फ्रॉम इंटीजर्स। अभी इस न्यूमेरिकल से हम देखें तो 4 एंड A इक्वल्स टू 4 एंड B इक्वल्स टू 16 and 1 and 0 come from integers. Similarly, we can say that for 21 and 27, the GCD of 21 and 27 is 3, and also 21 into 4 plus 27 into minus 3 equals to 3. So AU plus BV equals to 3 equals to D. Okay, जहाँ पर D equals to 3 आता है because D equals to GCD of 21 and 27 that is equals to 3. यहाँ पर 4 and minus 3 belongs to integers, so ये condition satisfy करता है. Okay, so we already shown that AU plus BV equals to D ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, और इसे अगर हम न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस करें तो हमने 4 और 16 के लिए एक्सप्रेस किया था 4 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। इसे हम 4 इंटू माइनस 3 प्लस 16 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 ये भी कर सकते हैं। 4 इंटू 5 प्लस 16 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट alternatives for AU plus BV equals to D equation. Okay, now let AX plus BY equals to C be solvable. Let x1 y1 be a solution. Okay, x1 y1 पॉइंट सॉल्यूशन है, देयरफॉर ax1 प्लस by1 इक्वल्स टू c, दैट इम्प्लाई c इक्वल्स टू k1 dx1 प्लस k2 dy1, because we already shown that a equals to k1d and b equals to k2d, जहाँ पर k1 and k2 belongs to integers. Okay, that imply c equals to d into k3, where k3 equals to k1 x1 plus k2 y1. Okay, which belongs to also integers. That imply d divide c. Okay, because c equals to d इंटू k3, जहाँ पर k3 एक इंटीजर है। मान लीजिए c जो नंबर है वो 16 है, दैट इज इक्वल्स टू d जो है वो 4 है एंड k3 एक इंटीजर है जो कि 4 है। सो इसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो 4 है वो ऑब्वियसली 16 को डिवाइड कर रहा है। सो 4 जो है वो d है, सो d ऑलवेज डिवाइड 16 मतलब c, so we can write d divide c. Now conversely let d divide c. थियरम जो है वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के लिए होल्ड करता है। सो लेट d divide c, therefore c equals to kd for k belongs to integers. Also AU plus BV equals to D, that imply A into KU plus B into KV that is equals to KD, just by multiplying K both side. अभी KD क्या है? KD equals to C, that imply
ax2 plus by2 equals to c, where x2 equals to ku and y2 equals to kv, both belongs to integers. Hence ax plus by equals to c is solvable. ओके, सो हमने ax plus by equals to c इक्वेशन को सॉल्वेबल दिखा दिया है. नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, हेयर x0, y0 is a solution of ax plus by equals to c equation. Therefore ax0 plus by0 equals to c, ये आएगा. Therefore ax plus by equals to ax0 plus by0, putting the values, that imply a into x minus x0, that equals to b into y0 minus y, that imply k1 into d x minus x0 equals to k2 into d y minus y0 minus y, because we know that a equals to k1d and b equals to k2d, that imply k1 into x minus x0 equals to minus k2 into y minus y0, that imply x minus x0 divided by minus k2 equals to y minus y0 divided by k1 equals to t. Say we suppose that is equals to t, where t belongs to integer. Okay, that imply x equals to x0 minus k2t and y equals to y0 plus k1t. Just by solving this equation, we get x equals to x0 minus k2t and y equals to y0 plus k1t. That imply x equals to x0 minus b by d into t and y equals to y0 plus a by d into t for t belongs to integers. So hence proved. Now the second theorem regarding linear Diophantine equation. This is also same as the first theorem. So what is the statement? The linear Diophantine equation ax minus by equals to c. पहले थ्योरम में हमने देखा ax plus by equals to c इक्वेशन था, यहाँ पर ax minus by equals to c है. For abc belongs to integers is solvable if and only if d divides c. d c को डिवाइड करना चाहिए जहाँ पर d equals to gcd of a comma b. If x0 comma y0 be an initial solution, then the solution set is given by x0 plus b by d into t comma y0 plus a by d into t for t belongs to integers. Okay, so you can solve this theorem by the previous theorem. तो आप ये सॉल्व कर लेना. Now theorem 3 statement. Consider ax plus by equals to c with gcd of a comma b equals to 1. a और b का gcd 1 है. इसका मतलब a और b एक दूसरे के को प्राइम एलिमेंट है. मान लीजिए a इक्वल्स टू 4 या b इक्वल्स टू 5 या फिर a इक्वल्स टू 9 है, b इक्वल्स टू 11. मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होता है उनके लिए जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1 आता है. मतलब एक दूसरे के को प्राइम एलिमेंट. इफ x0 y0 be an initial solution then general solution is given by x0 minus bt comma y0
plus at for t belongs to set of integers. Now proof. We have ax plus by equals to c with GCD of a comma b equals to 1, and also here x0 y0 is a solution of ax plus by equals to c. Therefore ax0 plus by0 equals to c. Therefore ax plus by equals to ax0 plus by0 just by putting the value of c. That imply a हमने कॉमन ले लिया, a इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो इक्वल्स टू b इंटू वाई जीरो माइनस वाई. ओके, दैट इम्प्लाई x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई माइनस b इक्वल्स टू y माइनस वाई जीरो डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू t. से सपोज दैट इज इक्वल्स टू t, जहाँ पर t बिलोंग्स टू set of integer. That imply x equals to x0 minus bt and y equals to y0 plus at. Therefore the general solution is x0 minus bt comma y0 plus at for t belongs to set of integer.